Yeah, good evening everybody. Welcome to the session. और आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे which is on बटरफ्लाई आयरन बटरफ्लाई जिसको बोलते हैं आयरन कॉन्डोर जो कि एक मल्टी लेग स्ट्रेटेजी है. बट बिफोर पहले let me introduce myself. My name is Hitesh Chotalia and I have close to 26 years of market experience. Previously मैं शेर खान में टेक्निकल मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट था. फिर I was part of Asia Pacific Equity Research Team and held positions at Oswald Centrum, MK Global, and Finland Academy. So that was a brief about myself. Let's go into the session. So before I go into the sessions, I'll just take today's webinar. आज ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे. डेबिट क्रेडिट हर एक स्ट्रेटेजी में रहता है. और लॉन्ग बटरफ्लाई कॉल किसको बोलते हैं, शॉर्ट बटरफ्लाई कॉल किसको बोलते हैं, बेयर कॉल स्प्रेड क्या है, बुल पुट स्प्रेड क्या है, और दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो एक स्ट्रेटेजी आती है जिसको हम साइडवेज मार्केट ट्रेड कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एन आयरन कॉन्डोर. So we are going to learn, explore, and execute, and for our trading purposes, whatever we are going to discuss today. And the platform we are going to use is Stocko, InCred Money, Insta Options platform, and ऑल्सो हम ये डिस्कस करेंगे बटरफ्लाई आयरन कॉन्डोर कब यूज करना. ये साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटेजीज है, बट आज भी यूज करके देखेंगे. आज अगर यूज किया रहता ओपनिंग के पहले तो इंट्राडे में इसका क्या अनुमान रहता, इधर प्रॉफिट आता या लॉस होता. विल अप्लाई एवरीथिंग इन लाइव मार्केट्स राइट नाउ. स्ट्रेटेजी कंस्ट्रक्शन और पे ऑफ ग्राफ. स्ट्रेटेजी कंस्ट्रक्शन में कितने लेग्स कॉल्स के रहते हैं, कितने लेग्स पुट्स के रहते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोस थिंग्स. आइडल मार्केट कंडीशंस फॉर ईच स्प्रेड. हर एक देखिए स्ट्रेटेजी कोई भी यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी नहीं रहती है. जो भी हम स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन. रिस्क रिवॉर्ड, मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम रिवॉर्ड, एंड ब्रेक इवन एनालिसिस हम पे ऑफ graph में देखेंगे. and common mistakes traders make. See, the most common mistake traders make is they select the wrong strategy for the market condition. आपका market condition and strategy should go in hand for you to be successful in options. So before I go next, I will ask my co-instructor along with me, Mr. Deepak ji to take a poll. Yes sir, go ahead. So the poll says, have you ever used non-directional strategies like Iron Fly or Iron Condor? ये multi-leg strategies है. Yeah, the poll is happening. I guess 33% says yes, 69% says no. Now it's 31-69. So it looks like majority of you have not used, applied, or executed trade based on this strategy. One of the reason could be कि आपको इसकी expert understanding या knowledge नहीं थी. वो gap आज fill हो जाएगा. Yes. जब भी मैं ऑप्शन स्टार्ट करता हूँ ना, पहले हम जो ऑप्शन का बेस है वो लेते. डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है. 5 मिनट इस पे स्पेंड करते हैं. बिकॉज कभी भी आप ट्रेड करो तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि ये जो सौदा मैंने खड़ा किया स्ट्रेटेजी का, वो डेबिट में है कि क्रेडिट में. पैसा दे के स्ट्रेटेजी खड़ी की है कि स्ट्रेटेजी में पैसे आने के. सो हाउ टू नो दैट. बिकॉज दो चीज हो सकती है. इफ प्राइसेस आर गोइंग अप, द प्रीमियम ऑफ कॉल ऑप्शन गोज अप. सो इफ यू बाय अ कॉल, आपको पैसा देना पड़ता है, एंड वी कॉल इट एज अ डेबिट, जिसमें रिस्क इज लिमिटेड, रिवॉर्ड इज अनलिमिटेड. द सेकेंड इज, अगर भाव ऊपर जाता है, अगर कॉल ऊपर जाता है तो पुट नीचे आता है. तो आप तेजी दो तरीके से कर सकते हो, कॉल लेके या पुट बेच के. जब भी आप कोई भी चीज बेचते हो ऑप्शंस में तो उसको हम बोलते हैं, उसमें हमें क्रेडिट बोलते हैं. बिकॉज आप कोई भी चीज बेचते हो तो आपको पैसे मिलते हैं, यू रिसीव मनी. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्रेडिट. तो जब भी आप तेजी करो कॉल बाय करके, उसको डेबिट बोलते हैं. और जब भी आप तेजी करो पुट बेच के, उसको हम क्रेडिट बोलते हैं. तो इसलिए आप देखिए ऑप्शंस में जो भी स्ट्रेटेजीज है दो पार्ट में डिवाइड है. डेबिट स्ट्रेटेजीज, क्रेडिट स्ट्रेटेजीज. डेबिट स्प्रेड्स, क्रेडिट स्प्रेड्स, net debit, net credit. Do you always hear this word debit credit in option strategies? Give me a yes अगर आपने हमेशा ये चीज सुनी हो तो. Let me see how many of you are responding. This is as simple as this. Second is, when prices, जब भाव नीचे जाते हैं ना, when prices goes down, two things can happen.
Either the put option goes up, so you buy a put. Whenever you buy something, you pay money, and whenever you buy and you pay money, it is called debit. Second is, जब भी भाव नीचे जाते हैं, पुट नीचे, कॉल नीचे जाता है, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग पुट आप कॉल बेच सकते हो. आप कोई भी चीज बेचते हो तो उसमें आपको पैसे मिलते, यू रिसीव मनी. So when you receive money, it is called credit. So all the where the risk is limited, unlimited, reward is limited. Now the risk is unlimited part को हम कैसे हटा सकते हैं? By hedging, right? So this is what the foundation of options are. So now everybody clear what is debit and what is credit, what is a debit spread, what is a credit spread, what is a debit strategy, and what is a credit strategy. Give me a yes everybody. तब जाके मैं आगे बढ़ता हूं सर. Yes. सो नाउ आज का जो स्पेशल दो टॉपिक्स हम सीखने वाले स्ट्रेटजीज में, जिसको हम फ्लाई बोलते, कोई आयरन फ्लाई बोलता, कोई आयरन बटरफ्लाई बोलता, ये फ्लाई कैटेगरी में आती है. सो जो फर्स्ट है हम उसको बोलते लॉन्ग बटरफ्लाई कॉल. अभी लॉन्ग बटरफ्लाई कॉल कब करते? जब हमारा व्यू रहता न्यूट्रल ऑन डायरेक्शन. इसका मतलब है मार्केट में एक रेंज है एंड बेयरिश ऑन वॉलेटिलिटी. मान लीजिए कोई इवेंट आ गया, वॉलेटिलिटी हाई है, अभी वॉलेटिलिटी कम होगी. जब मार्केट रेंज में रहता, ये वॉलेटिलिटी कब बढ़ती है? मान लीजिए बजट के समय, या तो इलेक्शन के समय, या तो कोई भी टाइम पे आपको लगे आईवीज आज स्पाइक्ड अप एंड नाउ इस टाइम के आईवीज अभी कूल ऑफ होंगे. सो दीज आर नॉट ऑन डायरेक्शन. जो भी स्ट्रेटेजी हम आज डिस्कस करेंगे, दीज आर नॉन डायरेक्शनल. सो द व्यू आपका मार्केट में न्यूट्रल होना चाहिए ऑन द डायरेक्शन. चलो 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता, दैट इज नॉट अ डायरेक्शन. बट यहाँ से ऐसा नहीं कि 500,000 पॉइंट निफ्टी ऊपर चली जाए या 500,000 पॉइंट निफ्टी नीचे गिर जाए. नॉट दैट. द व्यू हैज टू बी न्यूट्रल फॉर यू टू डू लॉन्ग बटरफ्लाई कॉल. कॉल क्यों? बिकॉज ये बटरफ्लाई जो है उसका सौदा हम बैठाएंगे कॉल ऑप्शन के साथ. So just give me a minute. I get a prompt from Deepak ji, my co-instructor. He says anybody has any questions can ask. Yeah. किसी के पास भी कोई भी questions है तो वो पूछ सकते हैं. No questions yet. Second is strategy में क्या करते हैं? उसमें हम क्या करते हैं कि दो at the money call बेचते हैं. We sell. Why do we sell call? Because हम expect करते हैं market range bound रहेगा. अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता, हमें बेचने वाले को दो बेनिफिट्स मिलते. विच आर द फर्स्ट बेनिफिट्स? इज इट थीटा टाइम वैल्यू डीके? गिव मी अ यस और अ नो. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू पार्टिसिपेट. आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो ये सेशन में मजा ही नहीं आएगा फ्रेंड्स. यस. एंड द सेकंड थिंग व्हाई वी सेल इज बिकॉज वॉलेटिलिटी हाई है. हमने लास्ट सेशन में देखा था वेगा, इसमें आपको वेगा का बेनिफिट मिलेगा. वॉलेटिलिटी हाई है तो वॉलेटिलिटी अभी कम होगी, तो इसलिए हम दो कॉल ऑप्शन बेच देते हैं विच इज एट द मनी. उसके सामने हम क्या करते हैं? एक आईटीएम कॉल ऑप्शन बाय करते और एक ओटीएम कॉल ऑप्शन बाय करते. तो ये स्ट्रेटेजी की कंस्ट्रक्शन है फॉर अ साइडवेज मार्केट. आपको थीटा भी खाना है और आईवी कोलैप्स भी खाना है, वेगा भी खाना आपको. इसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वॉलेटिलिटी कम होगी. तो दो कॉल ऑप्शन एट द मनी, एक आईटीएम कॉल और एक ओटीएम कॉल बेचना है. दो बेचना, दो लेना है. So now risk is limited to the net premium. Reward क्या है? Limited to the difference between adjustment strikes minus the net debit. देखिए पहले के समय में ये एकेडमिक समय कैलकुलेशन पेन और पेपर एक्सेल में करना चाहिए था, बट आज की तारीख में हमारे पास इंस्टा ऑप्शंस है. स्टॉको इनक्रेड मनी इंस्टा ऑप्शन, तो हम पे ऑफ में डालेंगे तो हमारे सारे जो क्राइटेरिया है विच आर डिजिट्स इन नेचर विच मींस प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपने को दिख जाएंगे. तो हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है. रिस्क ब्रेक इवन इज अपर ब्रेक इवन इज हायर स्ट्राइक प्राइस माइनस नेट प्रीमियम. Lower break even is lower strike price plus the net premium. Profit is when ITM call exercised and other options are not exercised. Not exercised का मतलब है आपके फेवर में
डीके हो गया, भाव जीरो हो गया या कम हो गया, बिकॉज आपने बेचा, आपने दो एटीएम कॉल बेचा, अगर वही एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हो बिकॉज वो वर्थलेस एक्सपायर कर रहा, सो दैट्स वेयर यू मेक मनी। आपने बाय ओटीएम किया है, बट ओटीएम अभी, सॉरी आपने आईटीएम बाय किया है, तो आईटीएम अभी भी प्रीमियम है, तो वो आपको स्क्वायर अप करना है। और ओटीएम जो कॉल आपने बाय किया है, right? So this is how the construction is. Max loss is when all the option when all options exercised or all options are not exercised. अभी हम ये कंस्ट्रक्ट करके देखते, आज आज अगर मैंने लॉन्ग बटरफ्लाई कॉल किया रहता तो क्या होता, आपको सिर्फ स्टेप्स याद रखने, वन बाय वन वी विल गो। सो लेट देखिए, आज मैं सवेरे प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड्स बना रहा था, तो आज मैंने सवेर्स के रेट लिखे, वो हिसाब से मैं कंस्ट्रक्ट करते। तो सवेरे स्पॉट था 23,232। लॉन्ग बटरफ्लाई कॉल में हमें करना क्या है, सेल टू एट द मनी कॉल, बाय वन आईटीएम कॉल एंड सेल वन ओटीएम कॉल। हम दो कॉल जो बेच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वोलेटिलिटी कम होगी और मार्केट रेंज में रहेगा। सो लेट्स गो एंड कंस्ट्रक्ट दिस। So I'll go to my Stocko InstaMoney platform and we are going to apply it. मैं यहाँ पे निफ्टी लेता हूँ आज के दिन में। नाउ सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें, स्टेप बाय स्टेप लेट्स गो। सेल टू एटीएम कॉल। तो सवेरे जब मार्केट खुला, लेट्स से निफ्टी, मैं निफ्टी में चला जाता हूँ, तो ओपनिंग इन निफ्टी वाज 23,193। देखते खुलते ही गिर गया कि वो भाव था, लेट्स सी, yeah, that was where the opening in nifty was 23,300। तो at the money call option 23,300 रहेगा। Am I right, friends? Give me either a yes or a no. So first I will select 23,300। If you don't participate it becomes tough। यहाँ पे मैं दो लॉट कर रहा हूँ। So I am selling two lots of ATM call option। इसके सामने स्ट्रेटेजी कंस्ट्रक्शन में क्या है, बाय वन आईटीएम। तो मैं एक आईटीएम जाके यहाँ पे बाय कर ले रहा हूँ कॉल का, और ये आईटीएम 23,300 था, तो आपका आईटीएम कितना होगा, मान लीजिए 23,100 का आईटीएम ले रहा हूँ। सो लेट मी गो टू 23,100 आईटीएम। तो ये दो लेग कंस्ट्रक्ट हो गए मेरे। और तीसरा जो है वो सेल वन ओटीएम। अगर मैंने आईटीएम 200 पॉइंट नीचे लिया है, तो मैं ओटीएम 200 पॉइंट ऊपर लूंगा। दो लेग्स आ गए, इसमें तीन लेग्स है। तो तीसरे लेग के लिए आपको क्या करना, ऐड स्ट्रेटेजी, ऐड लेग्स। सो यू आर बाइंग एंड यू आर बाइंग ओटीएम विच इज 23,000, लेट्स से 500। मैंने इक्वल लिया, अगर आईटीएम 200 पॉइंट नीचे था, तो ये भी मैं 200 पॉइंट ऊपर ले रहा हूँ। क्लियर एवरीबडी? Now this is the strategy construction straight in the morning। अगर मैंने आज बटरफ्लाई ये किया रहता, फाइन, लॉन्ग बटरफ्लाई कॉल, सो मेरा सवेरे ओपनिंग में क्या ये भाव में ट्रिगर होता, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। 65 में अगर ये ट्रिगर होता, फाइन, तो मैंने एटीएम बेचा है, दो बेचा, कॉल बेचा, मार्केट नीचे आया। So can you see even in intraday I made money on this strategy? Give me yes or a no, because this is the graph। मेजर आपने सेल किया 65 पे, तो 65 वाला कहाँ आके खड़ा हो गया, 30 पे। आपने ओपनिंग के बाद भी यहाँ पे किया रहता 30 पे, तो वो फ्लैट क्लोज हुआ। गेटिंग इट एवरीबडी? क्लियर? आपको स्ट्रेटेजी के लेग्स डालने। और ये ग्राफ कहाँ से आ रहा है, गुड क्वेश्चन। देखिए एट स्टॉको इनक्रेड मनी इंस्टा ऑप्शंस में ये हमारे पास है कंबाइंड प्रीमियम चार्ट्स। अगर आप स्ट्रेटेजी करते हो तो इसको हमेशा यूज करो। right? अगर मैं एक्सपायरी तक इसको रखता हूं, तो मेरा मैक्सिमम लॉस है इसमें इतना, रिवॉर्ड इज अनलिमिटेड, प्रीमियम पेड। ये देखिए आपका ब्रेक इवन आ गया 23,130 on the upside, 23,469 on the downside।
एंड ये सारे ग्रीक्स है जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में सीखे थे. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द लॉन्ग बटरफ्लाई. एवरीबॉडी क्लियर? देखिए, आपको जब स्ट्रेटेजी कोई भी दिमाग में आती है ना, तो आप इसके लेग्स ऐड कर दो. लेग्स ऐड करने के बाद अब कंबाइंड प्रीमियम चार्ट्स पे चले जाओ. राइट. और ये कंबाइंड प्रीमियम चार्ट्स जो हम जैसे हम M2M देखते हैं ना अपने लेजर में, यहाँ पे आपको M2M चार्ट्स में देखने मिलेगा. तो पैनिक नहीं होगा, जो भाव पे किया है वो भाव पे आएगा. सो एवरीबॉडी क्लियर व्हाट इज अ लॉन्ग बटरफ्लाई कॉल? गिव मी अ yes or a no. Yes. See, always get into the habit of putting the legs in the insta options and see the comparative graph. So that way it will help you. So I have a questions to answer. So question is from Jojo. Jojo says, could you show the previous slide where long butterfly rules are there? See, the slides will be given to you, sir. These are the rules if you want, Jojo. So the slides you'll get it. These are the rules. Got it now? Jojo, is it clear? Have I answered it? You can go through it either in the recording. Yeah, Deepak ji, we have. Jojo, is it clear? Please give me a thumbs up if your question is solved. Selvaraj says today volatility increased. See, volatility increased, but there are multiple legs. Volatility increased, fine, but direction was where? आपने दो ATM के कॉल बेचे. अगर डायरेक्शन डाउन है, सी डायरेक्शन को वॉलेटिलिटी से मत कंफ्यूज करो. ओके, दो एटीएम कॉल बेचे जिसमें प्रीमियम हाई है, तो आपको तो मुनाफा होना ही है ना. स्ट्रेटेजी विल वर्क ना. अगर कॉल बेचे है और भाव नीचे है, तो इसमें तो फायदा ही का सौदा है ना सर. सो सेल्वराज, इज इट क्लियर? It was clearly, it worked in your favor today. So Silveraj says, how long butterfly will benefit if the volatility goes down? See, you are selling at the money calls, right? And this is bearish on volatility. If you have sold more, which is two call options, that means a cool off जो volatility में आती है, that is beneficial for you in the strategy. If you have sold, volatility cools down by let's say 3% and Vega is 10, so you make 30 rupees out there. Have I answered your question, Selvraj Sarmati? Today volatility was not there, sir. It was direction which was down and you sold a call. Yeah, I think I have answered all your question, Mr. Selvraj. Please give me a yes, sir, if your question is answered by thumbs up. Yeah, I'll wait for your yes or a no, sir. So let's go next. See, strategies you know, conditions you have to define. Okay. And then you have to put it in the Insta Options platform and see the comparative graphs. Now, the next part of this is after long butterfly call, we have in butterfly, you have two long call, short butterfly call. Now, Srinivas says buy OTM or sell OTM. See, the construction is there, sir. In long butterfly call, you are selling two OTM, is the main dominant position. Buy one ITM and sell one OTM. Got it, Srinivas? Srinivasa Murthy ji? Give me a yes or a no, sir. This is the strategy construction. If you want to do long butterfly call, just put the strikes in your payoff. Now we have a short butterfly call. Short butterfly call हम कब करते हैं? Neutral and it's opposite. There we were bearish on volatility, but neutral on direction. Here also हम लोग direction neutral है, मतलब range bound है, but we are bullish on volatility. मतलब volatility और बढ़ सकती है, जिसको हम IV बोलते हैं. मान लीजिए 12 का IV अभी 14, 15, 16, 18, 20 हो सकता है. Bullish on volatility. Got it? That's the only difference between long butterfly and short butterfly call. The first part is same to it, neutral on direction but bullish on vol. It's a volatility play. Strategy is
you buy 2 ATM calls and sell one ITM call and sell one OTM call. Why you are buying ATM call is here you are expecting volatility to go up. So जो rise in volatility है IV का आपको वो वेगा का benefit मिलता है and that's what it is all about, bullish on volatility. यहाँ पे IV और वेगा का आपका ध्यान रखना है. If somebody thinks he doesn't know this, please watch part 1 and part 2 of Option Greeks, which the recording is there both on our website and on our YouTube channel, which is Trade with Stocko. Then risk is limited to the difference between adjustment strikes minus net premium. Again, these all, the moment we put it, we get it in the comparative graphs. See, earlier क्या रहता था हम लोग जब आप भी टेक्स्ट बुक ऑप्शंस के करते थे सब हमें मैनुअल कैलकुलेशन करता था, this minus this, this minus this, this minus this. Now you see we are just doing it because ये part of the program है. All the calculations you don't have to do it. At just आप अपनी strike price add कर दो on Insta Money and everything is known to you. Reward is limited to the net premium received and break even is upper break even point is higher strike price. Higher strike price is your OTM call minus net premium. Break even equals to lower strike price plus net premium. That we'll see. If it's confusing to you, it becomes very clear the moment we add all the legs and go to Insta options. मैक्स प्रॉफिट कब होगी यहाँ पे जब ऑल ऑप्शंस एक्सरसाइज और ऑल ऑप्शंस नॉट एक्सरसाइज्ड, फाइन, एंड लॉस व्हेन आईटीएम कॉल एक्सरसाइज्ड एंड अदर ऑप्शंस आर नॉट एक्सरसाइज्ड. देखिए आप अगर कोई भी चीज बेच रहे हो और उसके नीचे भाव बंद हो रहा है, सो दैट्स व्हाट वी कॉल क्रेडिट. यू कीप ऑल द मनी. दैट्स व्हाट इट एक्सरसाइज एंड नॉट एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट. एकेडमिक्स में मत जाओ. अगर आप कॉल बाय कर रहे हो और जो प्रीमियम में बाई किया उससे नीचे बंद है तो वहां पे लॉस है. एम आई राइट? तो आप जो बाई कर रहे हो वो आपका डेबिट है, जो बेच रहे हो आपका क्रेडिट है. एवरीबडी नाउ क्लियर? आई हैव सॉल्व द कंफ्यूजन. गिव मी अ यस और अ नो. I'll wait for your yes or a no. See, whenever it comes to options, ये सब्जेक्ट बहुत टेक्निकल लगता है अगर आप बुक्स पढ़ो, स्लाइड्स देखो तो. बट इसको अगर बिजनेस की तरह आप रिलेट करो, मैं प्रीमियम बेच रहा हूँ, घर पे पैसा आया, आई एम अ सेलर, आई रिसीव मनी. मैं बाई कर रहा हूँ प्रीमियम, मुझे पैसा देना पड़ता है, सो आई एम अ आई डोंट, दैट्स you receive. Here you pay. If you receive, it's credit. If you pay, it's debit. Now it's clear. Debit credit के हिसाब से देखो तो ये सब्जेक्ट बहुत सिंपल है. Now let's go for the strategy construction for short butterfly call. यहाँ पे वोलेटिलिटी एक्सपैंड होनी चाहिए. आप दो एटीएम कॉल बाई कर रहे हो तो डायरेक्शन आना चाहिए आपके फेवर में. गेटिंग माई पॉइंट? भले एक रेंज में रहे बट भाव बढ़ना चाहिए. And you sell one ITM call and sell OTM call. So in short butterfly call, what I'm doing is buy two ATM call. So let me go to my Insta options. तो यहाँ पे जो sell था, I'm just putting it to buy. So I'm buying two ATM calls. Morning में 23,300 का भाव था. Let's say आज सवेरे खुलते ही मैंने किया था. और सामने what is the next two leg? Sell one ITM and OTM call. Equidistance रखूंगा मैं. So you sell one call which is ITM, it's okay, 23,100, and sell again one call which is OTM. देखिए मैंने जो ATM था, ITM और OTM इक्विडिस्टेंस पे लिया. अगर आप इसका भी देख लो ग्राफ तो more or less it's coming to same. Getting my point, everybody? So now if I go to payoff graph, it tells me that these are the parameters. Maximum profit is 2,000. Loss is unlimited. Reward ratio is unlimited. This is the premium paid. This is the break even analysis. 23,133 is the break even on the downside. 23,465 is a break even on the upside. So now if I see the comparative graph, this is how it will look like. So everybody now clear? अगर खुलते ही मैंने ये भी आज किया रहता, okay, after opening, so then still I didn't lose money.
Everybody clear about this part, which is a short butterfly call? Give me a yes or a no. Yeah, I'll either wait for your yes or a no. See, ये सब मल्टी लेग स्ट्रेटेजीज है विच आपको डिफाइन करना। अभी आपको अच्छा लगेगा मैं चार्ट्स पे जाऊंगा तो फाइन। अगर मैं चार्ट्स पे चला गया, लेट्स से दिस इज निफ्टी। देखिए यहाँ पे तो मैं न्यूट्रल करूंगा नहीं बिकॉज दिस इज डायरेक्शनल। अगर आप कैसे देखते हो, देखिए बहुत बार क्या होता है ना, मार्केट में न तेजी होती है न मंदी होती है। चलो हम लोग ये दौर देखते हैं। ये जो ट्रम्प साहब का टैरिफ का अनाउंसमेंट था, मार्केट जोर से बढ़ा था, उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे, सो लेट मी हाईलाइट दिस पार्ट। सो सी वॉट एवर वी डू वी हैव टू सी इन द रियल मार्केट फ्रेंड्स, ओके, नहीं तो मतलब नहीं बनता। देखिए यहाँ पे कितनी एक्सपायरी मार्केट्स फ्लैट था। सो दिस इज ऑन ट्यूसडे, एक्सपायरी थी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। So these are 5 days. So this is 3 weeks. Fine. So अगर 3 weeks मार्केट साइडवेज था, तो विल योर एनी डेबिट स्ट्रेटेजीज जिसमें आप कॉल बाय करते हो या मंदी स्ट्रेटेजीज पुट बाय करते हो, वुड हैव इट मेड मनी? यस और नो फ्रेंड्स? पैसा बना रहता? All 3 weeks you would have lost money if you did a directional trade. Am I right or wrong? यस। सो ये जो 3 हफ्ता है, ये 3 हफ्ता में आपकी न्यूट्रल स्ट्रेटेजी से काम किए रहती। अगर वो करते आप तो ही पैसा बनता। नाउ आई थिंक एवरीबडी गॉट इट क्लियर। यस। सो देखिए स्ट्रेटेजी मार्केट कंडीशंस के साथ रहती है, इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी स्ट्रेटेजी यूनिवर्सल नहीं है कि हमेशा कर सकते हो। यूनिवर्सल तो all strategies have to be selected as per the market condition। तो 3 हफ्ता मार्केट साइडवेज चला गया, यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज ही काम करेगी, डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज नहीं काम करेगी। गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? नो, अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो ऑलवेज यूज न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज। अभी मार्केट डायरेक्शनल है, स्ट्रेटेजीज विल वर्क बेस्ड ऑन, बिकॉज आप कभी भी स्ट्रेटेजी देखते हो तो उसमें लिखा हुआ रहता है इट इज अ न्यूट्रल or a bullish or a bearish. So I'll just take a pause, friends, and we have a question. So my co-instructor along with me, Deepak ji, Srinivas Murthy says, 1 second, sir, give me a minute. Deepak ji, I have a question. Srinivas ji says, how do we know in the morning? Right now, how do you know in the morning? Do you know one thing, whether markets are bullish or bearish? Srinivas ji, based on price charts, your analysis, am I right, sir? See, right now, either markets are bullish, bearish, or neutral. I wouldn't say market are neutral right now. Market are bearish right now. Getting it, sir? So based on that, you have those strategies, sir. Are market in a range right now, sir, or they are directionally going down? If they are directionally going down, then you can select a debit or a credit strategy based on the direction and not on neutrality. Now clear, sir? Have I answered your question, Srinivas ji? At every phase, you will have a conditions in the market. Srinivas ji, see, yes, his question has been answered. That's fantastic, sir. Ramesh Krishnan says, sir, your way of teaching very good. And 1 second, sir, you are praising me. So let me, okay, read the questions. Thank you so much, sir. At end of the day, when market hammers you like anything, always a word of appreciation is helpful, sir. So I have Ramesh Krishnan ji says, sir, your way of teaching very good, and also can explain a checklist of deciding to deploy direction on direction objective parameters. See, objective parameters, sir, is simple thing: bullish, bearish, or neutral. Go with the direction. So before I go to the next strategy, which is honestly a combination of two strategy, which is see, I can't say this is good or bad.
but this is my favorite. I don't do both together. And this strategy, you see, Iron Condor is, if I break it, I have a bullish, I have a bearish, plus I have a neutral. If you know Iron Condor, all three are combined in one. You can select one leg. Then it's not obviously an Iron Condor. Nahi hai ye. Sorry to continue in speaking in English. Sometimes I just forget we have a group of traders who are pan India. तो इसमें ऐसा है ना, दो स्ट्रेटेजीज है, बुलिश और बेरिश, और दोनों मिला के कॉन्डोर होता है. तो कॉन्डोर अगर आपने सीख लिया सर, ये दिस कॉन्डोर, ट्रस्ट मी, इन वन स्ट्रेटेजी you can break it in three complete strategies: bullish, bearish, and neutral. If you ask me, I have lots of this thing for Iron Condor, which Iron Condor should be, every trader should know this. So this is one of, I would say, a great strategy out there, because all, हर एक तीन लेग में, आयरन कॉन्डोर में दो लेग रहते हैं, मंदी का और तेजी का. आइदर पूरा कॉन्डोर करिए, or if you are bearish you can take the first leg, if you are bullish you can take the second leg, if you are neutral you can take all, both, combine both the legs, or iron condor कर सकते हो. So iron condor is something which every trader, again I repeat, should be aware of it, and day in and day out, you can build a trading career out of it. Out of all the two legs decided, combine it, do a condor, or do the legs separately. So that's, we'll have a question has been assigned to me. Oh my God, I forgot a question. No, Deepak ji, कोई question तो नहीं है sir यहाँ पे. I have answered all the questions. Now we'll take a poll, sir. Yeah. Deepak ji, we Yes, can, I think, Ramesh ji, thanks so much, sir. Yeah, Deepak ji will do the poll. yes, sir. We So I'll can do get the my poll. co-instructor, who is such a great help and assistant to me in these sessions, Mr. Deepak ji. Yes, sir. We'll go ahead with the poll, Deepak ji. Sure, sir. We will go. We can go for the poll, but before that, we have a question There is from no Mr. poll. Joseph. I've assigned to you and Mr. Srinivasa Murthy. Yeah, Deepak ji, are you there, sir? Is my audio loud and clear to you all, friends? Yes, sir. If yes, okay. Great, sir. Venkataramana ji. Sir, iron condor can be used in any kind of markets. Again, you see, first don't see iron condor. See the both legs separately. Either you want to pick out of one and combine the both. So accordingly, you can do it. Clear, sir? I'll explain to you. So Deepak ji, if there are no poll, I can go ahead, sir. Are you there, Deepak ji? No. Fine. Yeah. So did you attend previous webinar? A very, very important way to, for your learning, 50%. Oh my God, 33 years, 67, no. Oh my God, 25 years, 64, no. Sir, क्यों नहीं आते हो webinar में? Record, okay, how many of you saw the recording? Give me a yes. अगर आपने live नहीं देखा तो कितने जन ने webinar का recording देखा है? So the poll says yes, I joined, which is 33%. No, I didn't, which is 67%. Yeah, plus I'm getting a lots of thumbs up saying they watched the recording. So now I'll take you to Iron Condor in a practical way, because I want you to master this strategy, either all the legs in a sideways or individual legs in a bullish or bearish. See, two things can happen. Either market, this is the high, and let's say this. So in Iron Condor, what you do is you first initiate a bearish leg, which is you sell a call option if you don't expect price will go above particular high, and as a hedge you buy a call option, right? So let's say if you sold this, you bought a higher, so the premium you received here is great, so it's a net credit. Got it? So if you are doing this, which is sell a call and buy a higher call, this is called a bear call spread. Everybody clear? सब कोई क्लियर है? बेयर कॉल स्प्रेड में आप कॉल बेच रहे हो और उसके सामने एक कॉल बाय कर ले रहे हो.
जो आप बेच रहे हो वो पास वाला कॉल है और जो बाई कर रहे हो वो दूर वाला कॉल है, तो मतलब इसमें नेट प्रीमियम आएगा। अगर ये कॉल में बेचता हूँ 23,800 का, मान लीजिए इसका प्रीमियम 20 है, तो ऊपर वाले का प्रीमियम 5 रहेगा, तो 5 रुपए घर पे आएंगे। सो बियर कॉल इज नेट credit, which means you are receiving money. Everybody clear? What is a bear call spread? Give me either a yes or a no. Yeah, I want yes or a no. Second thing is, let's say you think that market might not go below this level. So you sell this put. What you are selling, the premium is more, and as a hedge, you buy a lower put. Fine. So I have, you buy a put which is lower. So let's say you sold a put option of 22,600. Let's say the premium is 20 rupees. So आपके 20 रुपये आपके घर पे आए, और सामने अगर 22,000 का पुट में बेचता हूँ 5 रुपए में, तो 20 में मैंने बेचा और 5 में मैंने खरीदा है, तो 15 रुपए का नेट क्रेडिट है। एम आई राइट? तो इसको हम बोलते हैं बुल पुट स्प्रेड। Everybody clear? Give me a yes. So now bull put spread is also a net credit. Why net credit? Because मैं जो प्रीमियम बेच रहा हूं उसमें मुझे पैसा ज्यादा आ रहा है, जो खरीद रहा हूं प्रीमियम उसमें कम है। तो ऐसा अगर सिचुएशन है तो नेट नेट पैसा प्रीमियम घर पे आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नेट क्रेडिट। आप पैसा लेके काम कर रहे हो, दे के नहीं काम कर रहे हो। एवरीबडी नाउ क्लियर? गिव मी अ यस और अ नो। Like somebody asked me, this is something which every trader should know. Like now, uh, let's say you are bearish. Iron Condor has two legs. If you are bearish, then you can just select this one. So let me change the color. So I'll mark it red. Okay, sir. And I will text. Text I'll make it white. Everybody clear? If you are bearish, do the bull call spread. Sorry, bear call spread. If you are bullish, market will reverse. You can do a bull put spread. Getting it, everybody? So this I will highlight it in this color, blue, and font color I'll make it white. Everybody clear? Give me a yes or a no. I'll wait for your yes or a no, friends. Yes. But now if you think that market is in a range, then you combine the bear call spread plus the bull put spread, and when you do all the four legs together, it becomes Iron Condor. Was it simple to understand what is an Iron Condor? Since it's a neutral, तो मैं इसको black में कर देता हूँ. Was it so simple to understand? So now I think Ramesh Krishnan ji, there was a question from you, sir. Iron Condor has two spreads. Both are net credit, which is on the call side, bear call spread, on the put side, bull put spread. If you are bullish, you can select this. If you are bearish, sorry, if you are bearish, you can select upper one. If you are bullish, you can select bull put spread. And if you are neither bullish nor bearish, if you are neutral, but you want a strategy which is a credit based strategy, credit spread, where the net premium is premium received, so you can combine both and do a Iron Condor. Is Iron Condor clear, everybody? Give me a yes. See, let's see in this phase of the market, okay, these 3 weeks. Over here, had you done only bear call spread, your trades would have worked. But when markets were range bound, fine. Had you done Iron Condor or any of this, all the three would have worked. Getting my point now? So if I take the high
and I do this, then it becomes my bear call spread. Give me a yes, everybody. Simple. And now, if I take this low till it was in a range, after that, once the range breaks, I will lose money. You could have only done this part, which is a bull put spread. Fine. So you sell a put and buy a lower put. Everybody clear? Now, if somebody says, okay, he thinks it's in a range, neither it will break up or down. So all could have done is combine the both. So when he combined the both, what happened? It became Iron Condor. So was it very simple to understand? Iron Condor has two strategies which are combined to. So Iron Condor is two credit spreads, which is a bear call spread, which is a net credit, which means you receive premium, and a one bullish, which is a bull put spread in which you receive premium. And if you combine both, it becomes a neutral, which is an Iron Condor. So which means you are expected market will neither break this range on the upside, so you swallow all the premium, पूरा premium खा लो आप, neither it will close below this mark, so you swallow all the premium, पूरा premium खा लो आप. इसमें हम premium खाते हैं. That's what we call credit. So this is a iron condor. देखिए दो मैंने अलग तरीके से समझाया. Iron condor chart पे समझाया. Which did you like the best? This one? Give me thumbs up. बिकॉज सब चार्ट देखते हैं, तो कभी कभी मैं स्ट्रेटेजी जो है ना वो चार्ट्स पे भी समझा देता हूँ. बिकॉज कोई भी स्ट्रेटेजी आप करो तो आप लेवल के बेस पे ही करते हो, बिना लेवल के तो करते नहीं हो ना भाई. तो आज की तारीख में आयरन कॉन्डर तो मुझे नहीं लगता काम करेगा, बिकॉज वॉलेटिलिटी नीचे खुल रही है. ये तभी कर सकते हैं जब उस टाइम जब आपने भाव देखा, 3 हफ्ते भाव एक ही भाव में खड़ा था, 3 हफ्ते तक, मतलब पूरा महीना चला गया, भाव हिला नहीं. तो वहां पे आपके न्यूट्रल के अलावा या तो क्रेडिट स्प्रेड के अलावा और कुछ है ही नहीं करने के लिए. सो दैट्स व्हाट वी कॉल एन आयरन कॉन्डोर. इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. और चार्ट्स पे जनरली ट्रेडर्स को अच्छा समझ में आ जाता है, तो इसलिए मैं जार्गन ज्यादा नहीं यूज करता हूँ. So there's a question assigned to me. I don't see any questions. Let me see. No, Deepak ji, I don't have any question. Okay, answer the questions. Now I have. Yeah, Bharat Nanavati ji says chart is very easy. Thank you so much, sir. Fine. So that was today about fly, iron fly and iron condor. Which one you like? The butterfly category or the iron category? If it was butterfly, give me a thumbs up. If it was iron, give me a heart sign or anything. Which one you like today? Yeah, I had a heart is coming. I knew everybody would like. Iron Condor is so simple, and it's a great thing. Please master Iron Condor. Either you can do individual like तेजी मंदी भी आप कर सकते हो सर इसमें, या तो दोनों को कंबाइन कर दो. अगर रेंज में है तो आयरन कॉन्डोर बन जाता है. एक में आपको बुलिश बेरिश न्यूट्रल तीनों आ गया. आयरन कॉन्डोर सीख लिया तो आपके पास तीनों चीज आ गई. सो आई थिंक आई हैव अ क्वेश्चन. नो दीपक जी है नहीं सर यहाँ पे. गो टू क्वेश्चन लिस्ट. I have a question. Say the slide tells to buy twice the quantity. Absolutely, sir. Every strategy will have its construction, because you are buying. Sometimes you are buying more than you are selling in terms of premium received, or but the legs might be same, sir. Yeah, every strategy will. If you see, sir, ratio spread, credit ratio spread. That means you are buying one and selling 10. Right? Every strategy will be different, sir. Is your question answered? Give me either a yes or a no. See, the legs are based on strategy, sir, right? In ratio is 1 is to 5. So you're buying one and selling five is so every strategy will have its own construction. No, in it is called iron condor, Selvaraj. No, iron condor means everything is equal. If you are selling one lot call option, then you're buying one lot call call option. If you're selling one lot put option, then you're buying one lot put option. So all the legs are equal either on the upside or on the downside in iron condor. That's in front of you, sir, iron condor.
Is your question answered on Iron Condor? Give me either a yes or a no. So Deepak ji, do we have any questions, sir? I'll give you the microphone. I think Yes, sir. question and There are some answers we questions. were taking Should when. I read it for Sorry, you? sir. Huh? Yeah, we have a question from Mr. Ramesh Krishnan. But Should I read? yeah, I'm not getting the questions. Should I go to the question list? Yeah, Ramesh Krishnam says that assuming market will be sideways, we deploy Iron Condor on day one, and when market moves in direction, we do adjust buy cover opposite side. No, no, no. Iron Condor means all the four legs have to be deployed at the same time, sir. You can't do half this and half later. Then it's not an Iron Condor. Got it, sir? If Iron Condor says there are four legs, two on the call side and two on the put side, all you have to do at a one go, which means you go to Insta options and you feed all the legs. Yeah. My question was answered, Mr. Venkatraman. So see, whenever you are doing a strategy which is credit in nature, you need lesser time. So always weekly I would prefer compared to daily, sir. Sataradu says how you execute buy and sell is so simple, sir. Buy and sell, Sataradu, that you go to the platform Insta options. It is there, sir. Fine. All the legs are there. You don't have to do anything. Just go and place the orders. And all the legs will be executed at one go. So you don't have to do anything one by one. See, whenever you are doing a strategy, please execute through Insta options on place all orders together, because everything has to go at that same time. Have I answered your question? Okay. Srinivas ji said, but the last 3 days it was totally against the bearish thoughts. No, markets are bearish and it's going down only, no, sir. Then you could have done what we call a bear call spread. Okay. So now I have question from Jojo. He says we cannot confirm it's range bound until the range is clearly defined. Absolutely. So I'll read out your question. We cannot confirm it's a range bound until the range is clearly broken. While we are in a range, we think it's might break anytime. So what should we implement in the neutral strategy? See, if it's a range, till it's not breakout, you can't say no, it's not a range. Range means still high and a low is not taken out. Got it, Jojo? Your question, have I answered it, sir? Yes. So I have a question from Venkata Ramanji, says which options are good for Iron Condor, weekly or monthly? Can it be done as a day trading? Absolutely, sir. In a sideways market, it can be done. So which is better? If any credit spreads, the weekly expiry, the lesser the time for expiry is better. Have I answered your question, sir? Mr. Venkatraman, give me either a thumbs up or a thumbs down, sir. Oh, you gave me a heart symbol. That's fantastic, sir. Right. So yeah, execution has to be through your this thing. And plus, if you want to do any strategies, go to Insta Options platform. Let's see, I have default strategies. You want to do Iron Condor. Just select Iron Condor from here, sir. All the four legs are there. You're selling a call, you're buying a call, you're selling a put, you're buying a put. So let's say this is the bear call spread, in which you are selling 23,250 call, and as a hedge you are buying 22,600 call, sorry, 23,400 call. So this two call becomes your bear call spread. For bearish, you are selling a put which is 22,750, and a hedge you are buying a put which is 22 this thing. Got it, sir? If you want to see had you done an Iron Condor today at the open, 99 at one point became 86, it closed at 95. Clear, sir? So you can select all the strategies in our Insta Options platform. So I have a question from Mr. Venkatramanji, says, please tell the India VIX and volatility values
roughly before deploying Iron Condor? And do you track the value? See, these are sideways market, and typically in a sideways markets, volatility will not be very high, sir. And this is to be decided on the range, how much a market moves on a particular week. Typically, you have seen in a sideways market, the range is not more than 2.5 to 3%. That's how you select the strike price. Is your question answered, Mr. Venkatramanji? Yeah. So if you have any questions, please and all the strategy legs, you just keep on adding the legs or select from whatever strategies we have discussed so far. You can select it from bullish, bearish, and neutral. Today's workshop webinar was about the neutral strategies. Got it? Yeah, Deepak ji, any other questions, sir? No, sir, we have covered all the questions. Okay. So I think there will be a feedback Yes, sir. now. Okay. Yeah, there will be a Hitesh? survey post Yeah. webinar. Post webinar, friend, there will be a survey, and this survey is not for me, it's for you. In this survey is how we improve upon these sessions, what more you want for you to be a professional trader, all the educational supports, all the platform supports, and whatever we can provide. So this survey, please don't skip, please take this survey. So that's all from my side, friends. Thanks and have a nice day, everybody. Thank you, sir. Ji Deepak ji, and let's thank the see everybody. Please give a thumbs up for Deepak ji also. He's working behind the scenes so hard. Deepak ji is the director out there. So Deepak ji, you are getting lots of thumbs up, sir. Thank you, sir. Thank you, guys. Yeah, So now we can end the session, sir. Should I? yeah, sure, sir. Thank you, everyone.